I'm very glad and a little nervous to introduce my mentor, Professor Reeta Grewal. So, first of all, ma'am, thank you so much for accepting our request. And हाँ जी, तो हम पूरी अपनी टीम की तरफ से आपको वेलकम बोलते हैं और जो हमारे साथ सभी साथी जुड़ रखे हैं उनको भी हम वेलकम बोलते हैं। और इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक बता दूं कि हमें एक मैसेज आ चुके हैं कि इस सीरीज को थोड़ा बायलिंगुअल रखना है, तो आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी एज वेल. So first of all, we introduce a guest and a speaker, Professor Reeta Grewal. She has done his MA MPhil from Punjab Guru Nanak Dev University, Amritsar, with gold medal, and she has also done his PhD from Guru Nanak Dev University, Amritsar, and his area of research is urbanization, social and cultural history of medieval and modern India, special reference to northwest region of the Punjab. और अभी तक प्रोफेसर रीटा गरेवाल 36 years टीचिंग एक्सपीरियंस उनका अभी तक की जो टेन्योर है लाइफ में, तो उनका ये इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। और इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो अर्बनाइजेशन, पंजाब की कल्चर, रिलीजियस जो ट्रेडिशन है और पूरी की पूरी एक 5 सेंचुरीज की जो हिस्ट्री है, तो उसको डिपिक्ट करती हुई उनकी पब्लिकेशन है, जिनमें से खास तौर पर 5000 ऑफ अर्बनाइजेशन द पंजाब रीजन और 5 सेंचुरीज ऑफ द पंजाब ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, सोसाइटी, पॉलिटी एंड कल्चर। और अभी रिसेंटली प्रोफेसर रीटा गरेवाल, शी इज कोऑर्डिनेटर ऑफ आईसर, पीयू आईसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना जो लेक्चर है वो शुरू करें और हमारी टीम को और हमारे साथ जो जुड़े हैं साथी उनको उनकी नॉलेज को, उनके विजडम को पंजाब के ऊपर जो आपकी स्टडीज़ है उसे इनरिच करें। तो आई विल हेलो, तो मैं दोबारा से वेलकम करता हूं और प्लीज मैम ओवर टू यू। एंड इन बिटवीन लेक्चर के बाद किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो वो मैसेज में डाल सकते हैं, तो उन पर हम एक डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो प्लीज प्रोफेसर रीटा गरेवाल मैम, थैंक यू। Thank you so much, Amrit, for the warm welcome. I'm happy to be joining the Abohar History Project today. My husband's family is from Abohar, so I have a connection with it and I couldn't say no. So thank you to all of you for the invitation. I tend to ramble on when I'm talking on my favorite theme of urbanization, which is probably the only thing I've worked in. So I've tried to jot down what I should stick to and what I should follow. So I'm trying to give it some structure. What I intend to do today is to look at the broad pattern of urbanization over the last 5,000 years, looking especially at the small town and what was happening to the small town in this process of urbanization. I'll try to keep it very brief, very elementary, and I'm not going to go into too many details because I just want this overview to serve as a background for all of you who are working on the project and for those who would like to know something about urbanization. So we are just going to look at the process of urbanization, look at the pattern of urbanization of towns and cities in the northwestern region, covering what we may call the greater Punjab, the larger Punjab, or the pre-independence Punjab. So this entire area is what I have in mind. Towns and cities have been part of the urban scape in this region for 5,000 years. The earliest being the Indus civilization or the Harappan civilization, if you like. And therefore, there is this long history of towns and cities in the region. One of the things that we notice about urbanization is that this process is a constant one.
And there are always periods, phases in which the level of urbanization is increasing, and at other points of time there is a phase of decline or a period of decline. So this process is a continuous one, but it is never uniform and it is never in an unbroken line. There is a constant change taking place in the situation of individual towns and cities as well as the urban structure on the whole. When we look at this large area, we find that there are certain specific factors that help the process of urbanization. And wherever all these factors come together, we have the emergence of towns and cities on a large scale. So, all the areas of the Punjab are not particularly suited to the growth of urban centers, but some specific areas are more conducive to such growth. The very first factor that is important is geography. Towns and cities are centers of non agricultural activity, and therefore they are dependent on the surrounding villages, on the surrounding area for food, for raw material. So, towns and cities will only come up in areas which are geographically suited to urbanization. So, when we look at the geography of the Punjab, we would find that there are certain areas in which the soil is fertile, the rainfall is adequate, and therefore cultivation is being carried out. And therefore, it is only these cultivated areas that can support towns and cities. So, this becomes the first requirement of towns and cities, that they have to be located in a geographically suited area. Food, raw material should always be there. Uh, तो this is one of the important things. हम ये भी कह सकते हैं कि geography sets the stage for urbanization. After geography, economy is an important factor. Economy, by economy, we mean production that is taking place in the urban center. We are also referring to trade. We are also referring to economic institutions. We are referring to the means of communication, the different kinds of linkages. तो जैसे जैसे इन सभी एरियाज में कोई ग्रोथ होती है, कोई इंक्रीज होती है, वो सभी शहर को भी सपोर्ट करते हैं और उसकी एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं. तो अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, किसी किस्म की भी हो, एक प्रोडक्शन है, 4 किस्म की प्रोडक्शंस हैं, उनसे फर्क पड़ेगा. ट्रेड का सर्कल जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, थोड़े एरिया में ट्रेड हो रहा है लोकल लेवल पे, तो शहर छोटा होगा. लेकिन अगर दूर दराज के एरियाज तक आपका ट्रेड सर्कल चल रहा है, it would mean that the town is going to grow to a much larger extent. You have economic institutions like banks, like cooperative societies. जब इनकी डेवलपमेंट आती है, ये अपना एक एडिशनल एंगल जो है वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं. So economy is very important. The third important factor is political. Political would also include administrative. तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, आपके किस तरह के ऑफिसेस सेटअप हो रहे हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में. All of these are located in towns and cities. So they add another dimension to the town, to the functions of the town. You would also have the policies of the state, the activities of the rulers or of the government, वो किस किस्म के decisions ले रहे हैं. In the medieval times, you have a large number of rulers who founded new cities, new settlements. Hansi, Hisar, all of these were developed by individual rulers. रूलिंग क्लास भी इस तरह सपोर्ट करती है. हमारे पास वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां रूलिंग क्लास के मेंबर्स ने एक शहर को ओरिजिनेट किया, उसमें मार्केट बनाई, उसमें घर बनाए और लोगों को वहां लाके सेटल किया. तो मिडीवल टाइम में हम देखते हैं कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, लेकिन साथ के साथ ये पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं. Because they are adding another dimension and they are contributing to the growth of towns and cities in a given region. I'm sure we have several examples in the Punjab as well. In the present time, the government is contributing by way of
decisions that it is taking, the 5-year plans, the municipal corporations, what decisions are they taking, what kind of policies do they have. All this will have impact on the town and the growth of the town. So these administrative factors, these political conditions, these also would have a lot of impact. In the modern period, we have another set of factors which can be technological. आपके फाइबर केबल्स पड़ रही हैं, आपके गैस पाइपलाइंस पड़ रही हैं, इसके पहले कॉलोनियल पीरियड में रेलवे लाइंस, रोड्स, टेलीग्राफ वायर्स. So there are a whole lot of technological factors that can also contribute to the different activities in a town. जब वो आती हैं, जैसे वो आती हैं, उनका भी एक impact होता है on the growth of the town. तो छोटे से छोटी चीज भी हमें बता सकती है कि शहर में किन चीजों का, किन फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, असर हो रहा है. For instance, in the 1920s, in Abohar itself, if you can find that there is a photographer who has a shop, it means that there is a change in the society there. There are people who want photographs on different occasions. So the smallest of things, even a list of shops, is going to help you find out what kind of activities are taking place. So every new kind of technology is going to have some kind of small contribution to your town. We can also look at socio-cultural factors. Socio-cultural factors would include any kind of political associations, literary associations, religious spaces, pilgrimage, places of popular religion. All of them would also have an impact. In fact, from the earliest towns that we have, we find that the religious space is given importance. Because a religious space does not only mean that people are coming there for pilgrimage, it also means they are going to stay for some time. So it would mean a place to stay, it would mean additional market, it would mean additional requirements for people who are coming in. So the existence of a temple or the existence of a tomb where people are coming is going to give rise to a whole lot of other activities also that are taking place in the town. For those of you who are familiar with South India, you would remember that there are specific temple towns there. The town is nothing, but the construction of a temple gave rise to towns. There was this huge, elaborate temple that was commissioned by the ruler, which took 20-25 years to build. So when the temple was completed, तब तक वहां एक शहर बस चुका होता था. मंदिर के बिल्कुल आसपास आपके सब ब्राह्मणों के घर आ गए, उसके बाद औरों के घर आ गए, मार्केट्स आ गए, आर्टिजन्स आ गए, क्राफ्ट्समैन आ गए. तो इस तरह से वो शहर अपने आप से बन गया और इस तरह के बहुत सारे शहर हैं. So religion and other socio-cultural factors also play an important role. The offices of the political parties, all kinds of different associations, they all contribute to not only the social life, but also what is happening in the town and what is the life of that town. Another important factor that we need to look at is centrality. It's a concept from geography, where centrality means that a place is located almost equidistantly from a number of villages around it. So it becomes the most convenient point for collection of goods, for distribution of goods. It provides easy access. So a place that is in a central position vis-a-vis the surrounding area, it has more of a chance of growing, of emerging as a larger urban center. So these basic factors are at play when we are talking about the process of urbanization in any point of time and in any place. I would now like to briefly look at the different historical phases of urbanization in the Punjab region. The earliest phase is what we can call the proto-historic urbanization. The urban beginnings in the Indus Valley civilization. At this time, there was a wide area in which a number of towns and cities existed.
In fact, the area in which these towns and cities are located starts from the Himalayan foothills and goes to the Gujarat area, the Kathiawar Peninsula. So the areas of Gujarat touching Rajasthan, touching Western UP, this large area was covered, was dotted by a number of towns and cities. So you have urbanization on a very large scale. There is a wide area in which towns and cities existed. We also notice at this point of time कि ये जो शहर हैं उस वक्त ये अलग अलग साइज के हैं. ये सभी बड़े शहर नहीं हैं, लेकिन तीनों किस्म के शहर हैं. बड़े शहर भी कुछ हैं, मीडियम साइज के शहर हैं और स्मॉल टाउन्स भी हैं. तो ये हायरार्की जो है टाउन्स की ये एग्जिस्ट करती है. किसी एरिया में ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जैसे कि हड़प्पा के आसपास हमें एक कॉन्सेंट्रेशन दिखती है टाउन्स की, लेकिन दूसरे एरिया में ये थोड़े स्कैटर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. तो एक खास पैटर्न होता है अर्बनाइजेशन का, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स दैट आई हैड लिस्टेड अर्लियर आउट. So you have a concentration around the Ravi. This is the river along which there is a lot of concentration of towns and cities. We also find that there are significant aspects of the structure, the town planning. एक बहुत विजिबल किस्म के टाउन प्लान हैं जो हमें इन सभी शहरों में नजर आते हैं, एंड वी आर ऑल फेमिलियर विद दोज. इनकी सीधी सड़कें, राइट एंगल पे ग्रिड का इनका बनता है, पैरेलल किस्म की रोड्स. So there are these specific kind of architectural town planning features also. There is enough evidence of manufacture. इस वक्त बहुत किस्म की चीजें बनती हैं. बीड्स बनते हैं, टेराकोटा की चीजें बनती हैं, स्टोन की चीजें बनती हैं, डाइज हमारे पास हैं. तो बहुत अलग अलग किस्म की प्रोडक्शन इन शहरों में हो रही है. और ट्रेड का भी हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है कि ये जो शहर थे ये ना सिर्फ आपस में ट्रेड करते हैं, लेकिन ये दूर के एरिया से भी ट्रेड कर रहे थे. तो ट्रेड था, प्रोडक्शन था, इसलिए ये शहर जो है वो बढ़ते गए. ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी हैं. तो इस वक्त एक वेल डेवलप्ड अर्बन सिस्टम हमारे सामने आता है, जो हमारे पास एविडेंस है इंडस सिविलाइजेशन का. हमें पता है कि यहाँ बहुत सारे शहर थे. अभी तक जो हम जानते हैं वो है कि यहाँ 30 से ज्यादा शहर थे, क्योंकि बहुत सारे शहर अभी तक एक्सकवेट नहीं हुए, सारे लोकेट नहीं हुए. इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 30 से ज्यादा का हमें इस वक्त पता है कि इतने शहर यहाँ एग्जिस्ट करते थे. So there was a certain kind of growth taking place in this period. There was an expansion taking place in this period. और एक अच्छा अर्बन सिस्टम जो था वो that was in place. अब अच्छा अर्बन सिस्टम हम किसे कहते हैं? अच्छा अर्बन सिस्टम वो है जिसका एक बैलेंस्ड अर्बन पिरामिड बने. अर्बन पिरामिड से हमारा क्या मतलब? जैसे ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के बेस पे बहुत सारे छोटे शहर होते हैं, स्मॉल टाउन्स. 80 to 90% शुड बी स्मॉल टाउन्स. वो सपोर्ट करते हैं मीडियम साइज्ड टाउन को. तो 10 से 12% आपके मीडियम साइज टाउन होंगे. और उस अर्बन पिरामिड या उस ट्रायंगल के टॉप पे होंगी सिटीज. सिटीज बहुत थोड़ी होती है, 1 to 2% सिटीज होती है. तो ये जो पिरामिड बनता है ये एक स्टेबल अर्बन सिस्टम को सपोर्ट करता है. ये जो बहुत सारे स्मॉल टाउन हैं, छोटे शहर हैं, ये अपने से बड़े वाले को सपोर्ट करते हैं, मिडलिंग टाउन को, वो फिर सिटीज को सपोर्ट करते हैं, और ये एक बैलेंस्ड किस्म का सिस्टम रहता है. I am pointing this out because at a later stage and in a later period we will notice कि स्मॉल टाउन गायब हो गए और सिटी बड़ी हो गई. तो हमारा जो अर्बन पिरामिड है वो उल्टा हो गया. उसकी वजह से हमारा अर्बन सिस्टम बैलेंस्ड नहीं रहा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये जो अर्बन सिस्टम था इंडस टाइम पे ये बहुत बैलेंस्ड था, और इसमें हमारा एक वेल डेवलप्ड सिस्टम का हमें एविडेंस मिल रहा है.
ये जो सिटीज थी इंडस टाइम की, ये अराउंड 1700 बीसीई डिक्लाइन हो गई, और फिर करीबन 1000 साल तक हमें टाउन्स और सिटीज का एविडेंस नहीं मिलता। तो जो इंडस सिविलाइजेशन है उसको हम कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन, और फिर एक गैप आ जाता है, और फिर 600 बीसी के आसपास फिर से हमें शहरों का एविडेंस मिलने लगता है, तो उस पीरियड को हम कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन. So we had a first urbanization, then the towns and cities seemed to disappear. Many of them survived, all of them did not disappear. But then around 600 BC, we find that once again there was the revival of towns and cities, and a number of towns and cities came into being. In this early historical period, we find that a large number of the towns were actually surviving from the earlier period. If we look at the figures that are available, I'm trying to find that. हमारे पास दोबारा 12% 12% of the towns that existed in the Indus civilization continued even at a later date. तो कुछ वही सरवाइव करके आ रहे हैं, बहुत सारे नए टाउन्स भी बने अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में. फॉर इंस्टेंस पेशावर, सियालकोट, टाक्सिला, ये सब नए शहर थे इस एरिया में. So we have in this second urbanization a large number of new towns, some surviving towns, and once again we have a higher level of urbanization that was actually taking place. ये ज्यादा urbanization क्यों हुई? प्रोडक्शन भी इस वक्त बढ़ जाती है, शहर भी बढ़ जाते हैं, ट्रेड एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जो रूलर्स हैं उनका भी ज्यादा कंसर्न है कि शहरों में एक्टिविटी हो, क्योंकि वहां से आपका टैक्स आता है, वहां से आप कलेक्ट करते हो कस्टम्स, तो उनका भी एक इंटरेस्ट है. तो इन सभी फैक्टर्स के कारण हम जब ये पीरियड देखते हैं फ्रॉम 600 बीसी ऑनवर्ड्स, तब से एक कॉन्टिन्यूअस अर्बनाइजेशन चल रही है इस एरिया में, और इसकी जो लेवल हम कह सकते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग. From 600 AD, there was earlier an idea that there was an urban decay that happened, और बहुत देर तक ये डिबेट चलती रही कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में टाउन्स और सिटीज जो हैं वो डिक्लाइन होने लगे, सभी रीजन्स में, पंजाब में भी, larger Punjab that is. So this debate went on for a long time. R.S. Sharma की किताब है. Also we have a book by Chattopadhyay. B.D. Chattopadhyay is talking about in the 8th to 10th century, there is the emergence of new towns and cities. So by now we are clear कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन जरूर हुआ था, पर ये कोई कंप्लीट डिक्लाइन नहीं था. There it is more of a shift that was taking place. New urban centers were coming up, new trade routes were coming up, and therefore urbanization was just changing in its location, in its pattern, but it was very much alive. And we find that this was not a total decline, it was not a permanent decline. Economic activity in fact बढ़ गई थी. वी नो कि ये जिस जगह को हम अब कहते हैं पिहोवा, इसका नाम पहले था पिर्थुदाका. पिर्थुदाका में एक हॉर्स की मंडी लगती थी रेगुलर. तो ये सिर्फ एक आइटम, हॉर्सेस अलोन, उनकी इतनी बड़ी मंडी थी कि दूर दूर से राजे भी और रूलिंग क्लास के मेंबर्स भी और लोग भी सिर्फ हॉर्स खरीदने आते थे. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइज्ड अर्बन सेंटर जिसका एक ही खास काम है. So this is one example of how there is a higher level of urbanization taking place. There is specialized kind of markets coming into being, and the towns are revolving around this kind of activity. So in this period, we have the revival of towns, we have new towns, and we have the growth of urbanization. If we move on to the next period, which would be the 11th to the 17th century. In this period, we find that we have a lot of sources which are talking about the towns and cities, and these sources are listing a number of towns
In fact, earlier when I was talking to some of the members of the project, I was telling him that Abohar is mentioned in the 15th, 16th century by Ibn Battuta. So Abohar is not a new town, it is an old town, but it went through phases of decline, phases of re-emergence, like all other towns in this area and elsewhere. We have Al Beruni, who is referring to a large number of urban centers, और वो नोट करते हैं कि ये पुराना शहर है, ये नया शहर है. तो इस तरह से वो हमें डिफाइन करके दे रहे हैं कि जो अर्बन पैटर्न है वो किस तरह से चेंज हो रहा है. लेकिन उनकी लिस्ट जो हैं, अल बेरूनी की लिस्ट है, मिनहाज उस सिराज की लिस्ट है, इब्न बतूता उसमें कुछ कह रहे हैं, बरनी की तारीख फिरोज शाही में कुछ है, वाक़यात मुश्ताकी में कुछ है. तो बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं मिडीवल पीरियड की, उसमें कई सारे अर्बन सेंटर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये जो बहुत सारे टाउन्स और सिटीज उभर के आ रहे हैं, we can say that in this period urbanization intensified. We have more and more towns and cities that were coming into being. The urban process was actually expanding. The number of towns was increasing, the size of towns was increasing, and therefore there was an expansion of urbanization taking place. But at the same time, you have de-urbanization also. पर डी-अर्बनाइजेशन उस लेवल तक नहीं होती कि आपके शहर गायब हो जाए. एक जगह अगर डी-अर्बनाइजेशन हो रही है तो दूसरी जगह 4 नए शहर भी बन रहे हैं. So the overall level of urbanization was increasing in the medieval period. And at this time, the towns were not only economic centers, administrative centers, but they had also become important socio-cultural centers. In the Punjab, we can easily identify with these new religious centers that were emerging. We have several of them: Kartarpur, Anandpur, Ramdaspur, Sri Hargobindpur, Khadur Sahib, Goindwal. All of them are connected to religious activity. So the medieval town had a very strong element of the socio-cultural factors, and several of the towns and their economic activities emerged because of the religious function that they were performing and because of the religious activities that were significant at that place. When we come to the Mughal period, a comment that several historians have made is that the Mughal period is a golden age of urbanization. In the Mughal period, you have the expansion of towns. बहुत सारे शहर इस पीरियड में बने, और ये सभी शहर जो हैं ये ज्यादातर स्मॉल टाउन्स थे. ये बड़े बड़े शहर नहीं थे. बड़े शहर तो पहले से आ रहे थे, चल रहे थे ऑलरेडी. लेकिन बहुत सारे स्मॉल टाउन जो हैं वो 15th-16th सेंचुरी में इमर्ज कर रहे थे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट टाइम. You have a number of new towns that came into being. जो स्मॉल टाउन है मिडीवल पीरियड का, इसकी लाइफ कई बार छोटी होती है. ये 20, 30, 40 साल तक तो काम करता है, फिर कोई और शहर उभर के आता है और वो उसकी जगह ले लेता है. इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड रूट्स. किसी रूलर ने नई सराय बना दी, ट्रेड रूट उधर को मुड़ गया, तो वो छोटे छोटे शहर इस तरफ के डिक्लाइन हो गए, दूसरी जगह उभर के आ गए. So the small towns constantly are changing, ये हमें याद रखना पड़ेगा. लेकिन गायब नहीं होते, बहुत बार वो दोबारा से रिवाइव करते हैं अपने आप को, री-इमर्ज करते हैं as small towns. When we look at the number of towns in the Mughal period, we find that about 30% of the towns of the pre-Mughal time continued in the Mughal period. तो 30% टाउन तो पुराने वाले ही आ रहे थे. 50% टाउन्स माना जाता है नए टाउन्स थे. तो पहले हमने 12% कहा था जब हम इंडस वैली से आगे आए थे कि 12% पुराने टाउन सरवाइव कर रहे थे. जब हम मुगल पीरियड में पहुंचते हैं तो हम कहते हैं 30% पुराने वाले शहर जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे थे. So we know that the urbanization is very well entrenched, it is very well established, and it is continuing over this long period of time. Another
point or another milestone comes when we speak of the 18th century. The 18th century is usually, or was till very recently, thought of as a period of decline, as a period of chaos, of deterioration. But by now, we are clear that for towns and cities, initially the 18th century may have been a period of decline because of military activity in the Punjab, because of warfare in the Punjab, because of a triangular struggle between the Sikhs, the Mughals, and the Afghans. This would have affected the fortunes of the towns. But from the middle of the 18th century, when the new chiefs appeared, जब छोटे छोटे राजे आ गए, उन्होंने अपने अपने इलाकों पे कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे, इकोनॉमी को सपोर्ट करने लगे, तो उन्होंने अपने नए कैपिटल्स ढूंढे. अगर 100 से ज्यादा चीफ बने पंजाब के पूरे एरिया में, तो 100 कैपिटल सिटीज भी उनको चाहिए थी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए. सो द 18th century then also becomes a period in which you have a number of new towns and cities that were emerging. Rajat, about Hadiabad, I can't really specify, but maybe I can look up some information and share with you later. There was a question that suddenly popped up. Individual की बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी. Today I'm focusing largely on an overview. In the 18th century, because of political activity, the trade routes also shifted. ट्रेड रूट सारे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गए. वो जो दिल्ली से लाहौर और आगे सड़क जाती थी मुल्तान को, वो जो सड़क थी, वो जो ट्रेड था, वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया. तो ऑब्वियसली जो सारे उस ट्रेड रूट के ऊपर शहर थे, उनमें डिक्लाइन दिखने लगा. बट एट द सेम टाइम नॉर्दर्न एरिया में शहर बढ़ने लगे. प्राइम एग्जाम्पल जम्मू. जम्मू पहले छोटा शहर था, लेकिन 18th सेंचुरी में जब ट्रेड रूट शिफ्ट हुई और जम्मू के बीच से जाने लगी, तो जम्मू एक बड़ा शहर बन गया. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि जब एक तरफ डिक्लाइन होता है, तो दूसरी तरफ उसको बैलेंस करता है एन अर्बन ग्रोथ इन सम प्लेसेस एंड इन सम फॉर्म. In the 18th century also, we find that several small towns came into being. वो जो बहुत सारे चीफ थे, चीफ सिख भी थे, नॉन सिख भी थे, कईयों ने विलेजेस को अपना हेडक्वार्टर बनाया, तो वो विलेज जो था वो एक शहर में चेंज हो गया, तब्दील हो गया. तो क्योंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, वहाँ ट्रेड शुरू हो गया, तो इस वजह से वो जो विलेज था उसने अर्बन फंक्शंस अपना लिए और वो शहर बन गया. तो इस तरह से काफी सारे शहर जो है वो 18th सेंचुरी में बने. रंजीत सिंह के टाइम में भी क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, क्योंकि ट्रेड अच्छा था, स्टेबिलिटी थी, तो सभी शहरों को एक स्टिमुलस मिला और वो सारे शहर जो है वो बढ़ने लगे इन दैट पीरियड. So in the early 19th century also, you have a revival of a number of towns, you have new towns emerging, and there was urban development related to that economic growth. Agricultural growth bhi thi, production ki growth bhi thi, and the state was supporting all these activities. तो एक urban development का भी हमारे पास evidence आता है. 1849 में एक काम है गणेश दास का, चार बागे पंजाब, जिसमें वो 5 दोआब की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट विलेजेस की बात कर रहे हैं और वो शहरों की बात भी कर रहे हैं. शहर में क्या प्रोड्यूस होता है, क्या वो बनाते हैं, किसके साथ ट्रेड करते हैं, मर्चेंट्स कौन से हैं, कमर्शियल ग्रुप्स कौन से हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन से परिवार हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज में जो यहाँ के जाने माने शॉपकीपर्स हैं या जाने माने मर्चेंट्स हैं. चार बागे पंजाब में अगर हम आइडेंटिफाई करें 200 शहर मिलते हैं. तो कहाँ हम 30 की बात कर रहे थे, 1849 में ये गणेश दास का जो काम है, इससे हमें पता लगता है that there are over 200 towns located in the northwestern region. इनमें से 80% जो हैं वो स्मॉल टाउन हैं और सिर्फ 2% जो हैं वो सिटीज हैं.
What is important to notice in the middle of the 19th century is that you have towns and cities in all parts of the region. It's a well extensive, well developed kind of urban system that is in existence. And there is definite indication that there has been growth in the 18th and early 19th century. So there is an increased level of urbanization. There is a more rapid pace of urbanization that was taking place at this point of time. तो ये तो मिडीवल की हमारी डिस्कशन हुई कि मिडीवल पीरियड में अर्बनाइजेशन किस तरह की थी. जब हम कॉलोनियल पीरियड में आते हैं, कॉलोनियल पीरियड में ये जो अर्बन पैटर्न था ये चेंज हो जाता है. इसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है. और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आती है बिकॉज फॉर द कॉलोनियल रूलर्स it is the political administrative aspects that are most important. It is the colonial policy that is more important. पहले जो हमारे शहर थे, before the British arrived, they were largely emerging and they were growing on the basis of economy. और बाकी फैक्टर उसमें contribute कर रहे थे. But when we come to the colonial time, the British are taking decisions that suit their own colonial requirement. Means of communication वो control करते हैं, कहाँ से रेलवे लाइन जाएगी, कौन सी रोड बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी. तो जब वो नए किस्म के रेलवे लाइन सेटअप होते हैं, नई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप होती हैं, बहुत सारे पुराने शहर जो हैं वो रेलवे लाइन पे नहीं है, तो वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं. और जो रेलवे लाइन के पास आ जाते हैं सेटलमेंट, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. तो ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन पे बेस्ड है. जब हम कॉलोनियल पीरियड देखते हैं तो उनका कंसर्न है विद साइफनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक प्रोड्यूस. उन्होंने लेके जाना है, कराची लेके जाना है, बॉम्बे लेके जाना है, सारे पंजाब से इकट्ठा करना है. सो यू हैव a large number of railway junctions that come up, mandi towns that are established, and most important, you have the irrigation projects, the canal projects, you have the whole of Western Punjab that becomes cultivated for probably the first time, and you have new colony towns that are established there. These colony towns are planned towns. They are in the grid pattern, or they are in a geometric pattern, and they have a totally different architecture and environment than the old traditional town. So with the arrival of the British, urbanization becomes of a different kind. There's a transformation. You not only have an increase in number of towns, you have almost 300 towns that come into existence. If we look at the census records, which give us information. In 1881, there were 240 towns in the Punjab region. By 1941, there were 292 towns. So in the colonial period, you have this rapid expansion in the number of towns. 240 से almost 300 टाउन जो थे वो बन गए. So there is a very rapid pace of urban growth. We also find that in 1881, 91% were small towns, 1% were cities. But when we come to 1941, small towns 91% से चले गए 79%. और cities जो थी वो 1% से grow हो गई 3% पे आ गई. This is not just a figure, but it's a reflection of the major change that came about. Small towns were declining in the colonial period and the cities were growing at a very rapid pace. जो बड़े शहर थे वो और बड़े होने लगे. सारी लोग उस तरफ को जाने लगे क्योंकि ऑक्यूपेशन वहां है, लॉ कोर्ट वहां है, एजुकेशनल सेंटर वहां है, तो सब लोग वहां जाने लगे और जो छोटा शहर था उसमें कम लोग रह गए. इनफैक्ट कई ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जो शहर ही नहीं रहे, उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई that they were no longer
described as towns. They were no longer classed as towns. In fact, the census also gives you a list of classified, declassified, reclassified towns. ये अलग से नंबर हर सेंसस में दिया होता है. तो जब हम ये नंबर देखते हैं हमें पता लगता है कि कई बार टाउन जो है वो डीक्लासिफाई हो जाता था, कुछ देर के बाद 20 साल के बाद वो रिक्लासिफाई हो जाता था. So there is a lot of chaos taking place. There is a lot of flux that is taking place. And there is a constant change in the urban pattern. What we do find in the colonial period is कि आपके नए किस्म के टाउन्स आए, नंबर इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, स्ट्रक्चर एकदम बदल गया. छोटे शहर कम होने लगे, बड़े शहर ज्यादा होने लगे. वो जिस पिरामिड की मैंने बात की थी पहले, वो अब उल्टा हो गया. ज्यादा पॉपुलेशन आपकी बड़े शहर में चली गई, छोटे शहर में अर्बन पॉपुलेशन कम हो गई. ये पहले के मुकाबले में इट वाज अ रिवर्सल ऑफ द अर्बन सिस्टम. तो ये अर्बन सिस्टम अब स्टेबल नहीं रहा. इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे. जो छोटे शहरों की एक्टिविटी बंद हो गई या प्रोडक्शन बंद हो गया, उन्होंने इस अर्बन सिस्टम को अब सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे. तो हमारी जो अर्बनाइजेशन है इसको कई बार सूडो अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सचमुच में अर्बनाइजेशन नहीं है. ये केवल गिनती में लगता है कि इतने लोग यहाँ रह रहे हैं शहर में, लेकिन उस शहर में ना प्रोडक्शन उतने लोगों के लिए हो रही है, ना ट्रेड की एक्टिविटी बढ़ रही है, ना सिविक अमेनिटीज बढ़ रही है. कुछ नहीं बढ़ रहा वहां, सिर्फ लोगों का नंबर बढ़ रहा है. इस किस्म की अर्बनाइजेशन को सूडो अर्बनाइजेशन भी कहते हैं. So in the colonial period, we find you have not only colony town emerging, mandi town emerging, railway junction town emerging, you also have a large number of cantonments that were emerging. Cantonment was another British requirement. उन्होंने अगर कंट्रोल रखना है शहर के ऊपर, उन्होंने अगर पंजाब के ऊपर अपना होल्ड रखना है तो उनको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे कैंटोनमेंट्स जो थे उनकी स्थापना भी की. एक और जो नए किस्म का टाउन इस पीरियड में आया वो है हिल स्टेशन. हिल्स में पहले भी टाउन्स होते थे, लेकिन वो वैली में टाउन बसते थे. जो हमारे सारे पुराने शहर हैं हिल एरिया के, वो सब वैली में हैं, रिवर के पास है. लेकिन ब्रिटिश टाइम में हम देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर टाउन बनने शुरू हो जाते हैं हमारे हिल स्टेशन. Hill station were called alternative space, which were meant for only the British, so that they could relax, they could have a change, they could get away from the heat of the plains. So the hill station was created as an alternative space for the British. The Indian people were only allowed there to serve as helpers, to be servants, to be labor, और वो एकदम अलग रहते थे लोअर जगह पे. आप सब शिमला गए होंगे. यू हैव अपर माल, लोअर माल. लोअर माल में क्या आता है? सिर्फ सामान आता है, प्रोविजंस आते हैं, राशन आते हैं, लकड़ी आती है, फ्यूल आती है. अपर माल सैर करने के लिए. So you have a whole lot of these new kinds of towns and cities that came into being. If we specifically want to look at Abohar also was a planned town that came into being, very much like the colony towns, because the British required some settlement for administrative purpose. Therefore, this area was selected and you have this new town. You are familiar, you have a parallel system of roads in Abohar, which are named 1, 2, 3, 4. You have all those different streets, and therefore it would be part of this new kind of activity, which would be of the colony town. For the first time, Punjab was also directly connected to a port. Karachi was now one of the important ports, in fact, the fourth in India. And therefore, all the railway lines, they kind of converged on Karachi. So this also was a new urban development for the Punjab. So you have a lot of changes that are taking place, which is why the colonial period can also be called a period of an urban revolution. Revolution in the sense that you have an increase in the number of towns, you have an increase in the size of towns, you have a large number of new towns that came into existence of various kinds,
We've just mentioned those. Therefore, one can say that this transformation was revolutionary, and therefore the colonial period saw an urban revolution. So, in all this, we find that the colonial situation, therefore, was very different from the earlier one. Unfortunately, even in the post independence period, we have not been able to check this urban growth. We have not been able to control the number of people who are moving to the larger towns and cities, and we have to face a number of urban problems because we have not been able to have a healthy, well developed urban system. Even after 1947, our urban growth remains lopsided. Not much attention is being paid to the towns, especially the small towns. In the 1970s, we did have a number of master plans that were created for the towns. And the master town plan had a lot of vision for the development and growth of the town, but these were not carried out at the ground level. Therefore, the government has not been able to has not been able to correct the kind of direction that urbanization has taken, even 1947. And we are continuing more or less in the colonial pattern. So the towns have become rather deteriorated actually. I don't want to really take more time. I think we have a broad idea of what is happening in the Punjab vis-a-vis the urban pattern and the system that was in place. I would just like to point out for those of you who are working on the project and those of you who may want to think of research in urbanization later on, that when we look at the small town, there are certain features that we need to focus on. For a small town to survive over a long period of time, one, it needs to have a lot of linkages. Linkages or connections not only with the villages around, but also with other places. So, a good road network, a rail network makes a lot of difference for the survival of a small town. You also need local merchants, money lenders, because they are the group who are going to support trade. They are the group who are going to have the shops in the markets. They are going to be running the economy of the town. So, if a small town is to survive over a long period of time, the local merchants, the local money lenders, to identify them is important because without them, the economic activity cannot function. You also need religious spaces. They could be temples, tombs, popular religion, but a religious space is essential because that also accounts for a number of people coming in. The small town also needs an administrative status. अगर उसपे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, तहसील का हो, लेकिन कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी चाहिए. उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं. उससे बहुत और लोग भी फिर शहर में आते हैं जिनको तहसील ऑफिस से काम है, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम है किसी किस्म का. So the administrative status also is important. The small town, if it wants to survive, it also needs to have additional functions like education. Schools or colleges होने चाहिए. Health system अच्छा होना चाहिए. कोई socio-cultural activity चाहिए. Cinema ही चाहिए. Theater चाहिए. अगर ये चीजें small town develop करेगा, तभी उसकी survival हो सकती है over a long period of time. One last point. When we look at a town, it's not only a simple chronological history we can talk about or its production and trade that we can talk about, but an important dimension is also the socio-cultural environment of the town. कि उसमें किस किस्म का माहौल था, किस किस्म का लाइफस्टाइल वहां था, क्योंकि वो भी चेंज होगा. जो 1920s का लाइफस्टाइल होगा वो आज का नहीं होगा. So the lifestyle of people, which one can collect through oral history, which one can collect through interviews, this will also throw a lot of light on how the town has developed and what it is doing. For example, कोई idea होना चाहिए कि वहां पे street lighting कब आई, पाइप्ड वाटर कब आया,
टेलीफोन कब लगे, कितने लगे, टेलीग्राफ दफ्तर कब खुला, क्लब्स कोई हैं, जिम खाना है, किस किस्म की शॉप्स हैं, वो किस किस्म का काम करती हैं। मैंने फोटोग्राफी की एग्जांपल पहले दी थी कि अगर फोटोग्राफी की शॉप्स हैं तो आपको पता है, वन सेक सुमन, आई गेट बैक टू यू। एनुअल एक्टिविटीज भी इम्पोर्टेंट हैं, कोई फेयर्स होते हैं, कोई एनुअल गैदरिंग्स होती हैं, they also tell you about the time, about the town. And also the general mentality of people. What do they want from life? If you ask somebody who is now probably in his 90s, what did that person want from life when he was living in Abohar or she was living in Abohar as a child? And what do people want now? So the mental attitudes of people, of what they desire, what they want, is also a reflection of the socio-cultural environment of the town. So all these things would be important to study history. For urban history, we need to look at all these different perspectives, the political, the economic, the socio-cultural, the geographical, the technical, the religious, and together they can help us to unravel the history of a town and to see what it was like in the past and how it has come to be in the present. Thank you so much.